Hello, dear young learners. How are you all? A very warm welcome to your educator Prajata's EVS class. So, are you all ready to start a new chapter with me? So, yes, let's start the Environmental Studies Class 4 by Acknowledged series, Amit Publishing House. So, children, today we are going to start with chapter number 3 and the chapter is senses of touch and smell. सेंसेस क्या है ये टच के स्मेल के कौन से सेंसेस हैं ये चलिए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. So here can you see the pictures? Okay. So let's read it first. Then we'll come to know what are these. Our sense organs help us to recognize the things around us. हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है वो हमें क्या मदद करती है? जितनी भी आसपास की चीजें हैं उन्हें पहचानने में मदद करती है. They are sight from the eyes. Eyes से sight. Eyes हमें क्या देता है? Sight देता है, रोशनी देता है. Sound from ears. Ears से हम सुनते हैं. Smell from the nose. नाक से हम खुशबू लेते हैं, स्मेल करते हैं. टेस्ट फ्रॉम द टंग एंड टच फ्रॉम द स्किन. टंग से हम क्या करते हैं? अलग अलग तरीके की डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो है डिलीशियस फूड उनका हम टेस्ट लेते हैं, मजे लेते हैं और जो स्किन है वो हमें टच करने में हेल्प करती है. ओके, नाउ the sense organs help human beings and animals to move, talk, find food and escape danger. अब ये देखिए जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं ये ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को किस में हेल्प करती है? चलने में, बात करने में और अपना खाना ढूंढने में. प्लस कोई भी डेंजर अगर आ रहा है सामने, कुछ भी ऐसी चीज जिससे हमें बचना है उसमें हमें अलर्ट करने में हेल्प करती है. सो लुक हियर नाउ. आई हेल्प्स अस टू सी. ईयर वी हियर विद द ईयर्स. नोज वी स्मेल विद द नोज. टंग वी टेस्ट विद द टंग एंड स्किन हेल्प्स अस टू feel the sensation. The touch is being felt with the skin. So now children, the sense organs contain thousands of nerves. ये जो sense organs है ना हमारे सारे, इसमें thousands of nerves होते हैं, इतने पतले nerves होते हैं. They pick up signals from outside the world and carry them to the brain. कोई सा भी sense organ क्या करता है? वो बाहरी दुनिया से एक सिग्नल लेता है और वो सिग्नल को वो ब्रेन में पहुंचाता है. Brain, then what does brain do? The brain processes the signals and sends a message back to the sense organs. अब ब्रेन जो है वो प्रोसेस करता है उस सिग्नल को और वापस उस सेंस ऑर्गन को भेज देता है उसका आंसर. ओके, सो लुक हाउ स्मार्ट आवर ब्रेन इज. सेंस ऑफ टच. चलिए पहले हम सेंस ऑफ टच पढ़ेंगे. द स्किन कवर्स द बॉडी. जैसा कि आप सबको पता है हमारी पूरी बॉडी किस चीज से कवर्ड है? स्किन से कवर्ड. देयर आर मेनी नर्व्स अंडर द स्किन. और स्किन के नीचे बहुत सारी नर्व्स हैं. दे कीप अस फील द सेंसेशन ऑफ हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन. और ये हमें क्या करता है? ये सेंसेशन ऑफ जो स्किन है हमें सेंसेशन फील करवाता है हीट का, कोल्ड का, प्लस किसी टाइप का प्रेशर है या पेन है, ये सब हम अपने स्किन से फील करते हैं. यू कैन ऑल्सो नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हार्ड और सॉफ्ट, स्मूथ और रफ एंड वेट और ड्राई जस्ट बाय टचिंग. छू के ही हम बता सकते हैं चीज कैसी. When you touch an object, the nerves under your skin get pressed. Immediately, the pressed nerve send the message to your brain. अब जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो जो हमारी नर्व्स है स्किन के नीचे वो क्या होती है? वो प्रेस हो जाती है, दब जाती है और वो एक सिग्नल भेजती है
ब्रेन, वो जो प्रेस नर्व है, जो नर्व दबी है, वो एक मैसेज ब्रेन को सेंड करती है और फिर ब्रेन हमें प्रोसेस करके आंसर देता है कि हमने कैसी चीज को हाथ लगाया है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम होल्डिंग दिस स्टाइलस. ओके, दिस इज स्टाइलस. नाउ what I'm doing, I'm touching it with my finger. इसको फील करने के लिए मैंने अपने फिंगर से प्रेस किया इसको. अब मैंने जब ये प्रेस किया तो यहाँ पे जो नर्व्स हैं, अब जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ की जो नर्व्स हैं उन्होंने एक मैसेज भेजा मेरे ब्रेन को. मेरे ब्रेन ने उस मैसेज को प्रोसेस किया और उसका आंसर सेंड किया कि यू आर टचिंग अपराजिता, यू आर टचिंग अ स्मूथ ऑब्जेक्ट. ये जो आपने ऑब्जेक्ट हाथ में पकड़ा है ये बहुत स्मूथ है. ओके, और मेरे ब्रेन ने एक और चीज बताई मुझे कि स्मूथ होने के साथ साथ ये हार्ड भी है. दिस इज अ हार्ड ऑब्जेक्ट. फाइन. सो नाउ गुड और बैड टच. अब टच दो तरह की होती है, गुड टच एंड अ बैड टच. पीपल टच इन डिफरेंट वेज. Some touches make you feel nice, warm and comfortable. Such a touch is a good touch. अब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से टच करते हैं. सबका टच का तरीका एक नहीं होता है, और जो टच हमें बहुत अच्छा फील करवाए, वार्मथ फील करवाए, कंफर्टेबल फील करवाए, जिसमें हम कंफर्टेबल हो, दैट इज नोन एज अ गुड टच. All of us like the touch of our mother, जैसे मदर का टच हम सबको अच्छा लगता है. We are very comfortable with that touch. We feel the love and warmth in our touch. But the touch of all people are not the same. We feel uncomfortable when some people touch us in an unfriendly way. अब कुछ लोग जब unfriendly way में टच करते हैं जो कि हमें अच्छी फीलिंग नहीं देता है. We feel fearful and unsafe. उनका टच हमें डरा देता है, हमें लगता है कि हम सेफ नहीं हैं. This type of touch is a bad touch. इसको हम कहते हैं bad touch. We should keep away from such people. We should also tell our parents and teachers if anybody tries to touch us and we feel uncomfortable. Now children, it's a very big lesson for you all, for all of us, कि अगर हमें किसी ने टच किया है और उस टच से हमें अच्छा फील नहीं हुआ है या हमें अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन वो हमें बार बार टच कर रहा है, हमारे मना करने के बाद भी टच कर रहा है और हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, we should immediately what we should do. अगर वहां हम देखते हैं कि आसपास दूर दूर लोग हैं, we should start shouting so that the people come there, the people collect there, they gather there. Okay? और अगर ऐसा डेली कभी आपके साथ हो रहा है तो घर में जाके पेरेंट्स को जरूर बताइए, अपने टीचर्स को जरूर बताइए अगर स्कूल में ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ. ओके, डोंट एवर हाइड. कभी छुपाना नहीं है. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद एनी टच, दैट इज अ बैड टच एंड यू नीड टू टेल इट टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स. Now see, a hug is a good touch. A parent, a mother hugging a child. एक बच्चे को उसने हग किया है तो ये तो बहुत अच्छा टच होता है. Holding tightly with strict expressions is a bad touch. किसी को जबरदस्ती पकड़ना, किसी ने आपको आके जबरदस्ती आपको हग किया है, टाइटली पकड़ा है, that is a bad touch. So you should oppose that. Now children, what next? There's an activity. Match the things with the way they feel. अब यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं, इनको हमें मैच करना है कि जैसा कि ये फील होती है छूने के बाद, टच करने के बाद. स्ट्रॉबेरी. Have you seen a strawberry? खाई भी होंगी आपने स्ट्रॉबेरी. Yes. So strawberries कैसी होती हैं? How are they? They are soft or smooth. They are smooth. They are smooth. Now, feather, पंख, soft होता है ना, नर्म होता है. Feather, soft. Water, water is wet. Sand, sand लिया है, रेत ली है कभी हाथ में आपने. It is very dry and grainy. इसमें दाने होते हैं, particles होते हैं.
So sand is dry and grainy. Glue, गोंद कैसी होती है? स्टिकी होती है. It is very sticky. चिपचिपी होती है. Stone, stone is what? Rough. Stone is rough. Now oil on the floor. अगर फ्लोर पे तेल गिर गया है तो वो कैसा होगा? उस पर पैर रखते ही स्लिप हो जाएंगे. It is slippery. Oil on the floor is slippery. And table surface. Table top. किसी भी टेबल का जो टॉप होता है that is hard. So table surface is hard. Okay, children? Now moving further. Sense of smell. Our sense of smell tells us many things. हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो हमें बहुत सारी चीजें बताता है. When we enter a room where someone has been smoking up, we turn up our nose. अब हम किसी रूम में अगर एंटर किया, हमने वहां से कोई स्मोक करके निकला है और वहां स्मोक की ही स्मेल है, तो हम क्या करते हैं? अपनी नोज बंद कर लेते हैं. On the other hand, the smells of your favorite food being cooked makes you hungry. और अगर घर में, दूसरी तरफ अगर घर में मम्मा कुछ ऐसा बना रही है जो आपका फेवरेट फूड है, तो फेवरेट फूड कुक कर रही है और उसकी खुशबू आती है, तो क्या होता है? भूख तो बढ़ जाती है. मम्मा जल्दी दो, आई एम वेरी हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, ऐसे होता है ना? यस. सो सी, so our nose acts in a different way, two different ways the smell has acted. Actually, what we smell are tiny things called odor or smell particles. ये छोटे-छोटे smell particles होते हैं जो कि हम smell करते हैं. Millions of them are floating around, waiting to be sniffed by our nose. अब ये millions and millions हमारे चारों तरफ फैले पड़े हैं, ये float कर रहे हैं, बस हमें smell करने की देर. Sniff means smell, खुशबू सूंघने की देर. Okay? Now, your nose helps you to smell things. The nerves in your nose have special endings. अब nose की जो nerves होती है उसमें एक special ending होती है, बिल्कुल ending. That picks up the smells of the air you breathe. अब जब आप air को breathe कर रहे हैं, हम continuously air breathe in and out करते हैं, तो हम जब air breathe कर रहे हैं तो उसी के साथ क्या होता है? वो अंदर जाती है और immediately sends a signal to the brain. These nerves immediately send a signal to the brain. अब वो जो अंदर हमने स्मेल किया, एयर को ब्रीथ किया, उस नर्व ने हमारी ब्रेन तक क्या भेजा? सिग्नल भेजा. The brain reads the signal and tells you what kind of smell it is. आपने जो सूंघा है वो ब्रेन रीड करके वापस सिग्नल भेजता है हमें कि हमने किस टाइप के स्मेल को स्मेल किया, किस टाइप का ऑडर है. It tells you if a thing smells good or bad. अच्छा है स्मेल या बुरा. Our sense of smell is also a matter of personal choice. Now, ये जो sense of smell है ये एक personal choice है. Maybe कुछ चीजें हमें खुशबू उनकी अच्छी लगती है, सामने को नहीं लगती, आपके फ्रेंड को नहीं लगती अच्छी वो. Some of us like the smell of garlic, fish and mustard oil, but some of us find these very strong and unpleasant. अब कुछ लोगों को गार्लिक मीन्स लहसुन, फिश और जो सरसों का तेल होता है उसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है और अनप्लेजेंट, अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत अच्छी लगती है. So it's our personal choice. Most of us find the smell of perfumes, flowers and scented cleaners very pleasant. अब ये जो अच्छी स्मेल होती है ये तो सबको अच्छी लगती है, परफ्यूम्स की भी, सेंटेड क्लीनर्स की भी और फ्लावर्स की. Almost all of us would agree that a dead rat, rotting garbage, choked drains, unclean toilets, or an open gutter has a foul smell. इन सब की तो सच में foul smell होती है, सबको ही गंदी लगती है. We should respect each other's likes and dislikes. अब जो चीज हमें नहीं पसंद या सामने वाले को अगर पसंद है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. Rather than saying this is a very bad thing and आपको पता नहीं कैसे अच्छी लग रही है ये स्मेल. No, it's his personal choice, his or her personal choice. उसको अच्छी लग रही है तो लग रही है, आपको नहीं अच्छी लग रही, it's all your wish. Okay, it's all your smell, sense of smelling. Fine. Now, there's an activity, children,
Put a tick in the correct column. अब यहाँ कुछ स्मेल दिए गए हैं चीजों के. अब वो स्ट्रॉन्ग है या प्लेजेंट है या फाउल है, that we have to tick. Garlic. Garlic, it has a strong smell. Fine, it has a strong smell. Fish also has a strong smell. Rotten egg. Egg अगर खराब हो जाता है तो it gives a foul smell. Petrol. Petrol has a strong smell. Mustard oil. It also has a, सरसों के तेल में भी बहुत strong smell होती है. Rose. It gives you a pleasant smell. Burning plastic. Burning plastic, foul smell. Plastic burn करेंगे तो एक गंदी सी smell आती है. Baked cake. Wow. केक बेक हो रहा है तो बहुत प्लेजेंट इसकी स्मेल आती है. एंड इंसेंस स्टिक. इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती, वो भी प्लेजेंट स्मेल. ओके, नाउ चिल्ड्रन, डिफरेंटली एबल्ड पीपल. कौन होते हैं ये डिफरेंटली एबल्ड पीपल? देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट सी, हियर और स्पीक. जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते. They are called special people or differently abled people. ऐसे लोगों को special people बोलते हैं या differently abled people बोलते हैं. These people have special needs and they need our love and special care to lead a normal life. अब इनकी कुछ special needs होती हैं और हमें इन्हें क्या देना चाहिए? लव एंड केयर और स्पेशल केयर की जरूरत होती है जिससे कि ये एक नॉर्मल लाइफ लीड करें. दे डू नॉट नीड आवर सिंपैथी बट दे नीड आवर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट. उन्हें हमारी दया की जरूरत नहीं होती है, बस उन्हें एक कोऑपरेशन, उनके साथ हम उनकी नीड्स थोड़ा ध्यान दें और उनको सपोर्ट करें. दे नीड दैट. Now see, a blind person cannot see. एक ब्लाइंड पर्सन देख नहीं सकता. अ डेफ पर्सन कैन नॉट हियर प्रॉपर्ली. जिसको सुनाई नहीं देता, जो डेफ होता है वो सुनाई नहीं देता उसको ठीक से. अ डम पर्सन कैन नॉट स्पीक प्रॉपर्ली. और जो बोल नहीं पाता, जो डम होता है वो बोल नहीं पाता ठीक से. डिफरेंटली एबल्ड पीपल लीड अ टफर लाइफ देन नॉर्मल पीपल. जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं वो थोड़ा सा टफ लाइफ उनकी होती है. जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे थोड़ी टफ लाइफ होती है. वी शुड हेल्प देम टू बी इंडिपेंडेंट एंड लीड अ नॉर्मल लाइफ. हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए जिससे कि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करें. दे कैन परफॉर्म वेरी वेल इफ दे गेट गुड गाइडेंस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज. वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर उन्हें बहुत अच्छी से कोई गाइडेंस मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, हमारे बराबर की अपॉर्चुनिटीज. Many modern buildings are making ramps for wheelchair bound people because wheelchairs cannot go up the stairs. अब बहुत सारी मॉडर्न बिल्डिंग्स में रैम्प्स बनाए जा रहे हैं जिससे कि व्हीलचेयर में जो लोग व्हीलचेयर यूज करते हैं वो स्टेयर्स से तो नहीं जा सकती व्हीलचेयर्स, तो वो रैम्प्स को यूज करते हैं. Similarly, Doordarshan has special news programs for the hearing impaired. ऐसे ही दूरदर्शन में भी एक जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम आता है. स्पेशल कंप्यूटर्स आर बीइंग मेड फॉर द ब्लाइंड. जो देख नहीं सकते उनके लिए स्पेशल कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं. Such facilities go a long way in making these people independent. अब इन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ऐसी फैसिलिटीज बहुत काम आती है. Now look children, she is Helen Keller. Helen Keller was differently abled person too. Helen Keller भी एक differently abled person थी. She was both blind and deaf. ना उनको सुनाई देता था ना उन्हें दिखाई देता. Later, she became a famous author and a very popular teacher. Now she became a world famous author, children, और एक teacher भी थी. Just look how she got the guidance and she became such a famous personality. She used the Braille script to read. अब Braille script क्या होता है?
blind people use this script. It is a special kind of code that is made up of a combination of raised dots so that one can feel it with the hands to read. ब्रेल क्या होती है? जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ कोड which is made with the combination of raised उभरी हुई dots होती है, and when the blind person puts the finger on those dots उससे वो उसको read करता है. Fine? See, this is the Braille script. The dots are there, उभरे हुए dots, ऊंचे ऊंचे उठे हुए dots. So now children, let's do some exercise here. Test yourself. So children, why do we like the smell of certain foods? Name some. The smell is totally our personal choice. If we are smelling something which is very favorite to us, a favorite food of ours, then we definitely will like the smell of that food. Especially the children, they like the smell of pizzas, burgers. Yes, they are their favorite foods. So, it's totally our personal choice. Why should we treat differently abled people like one of us? We should treat differently abled people like one of us because they are amongst one of us only. Just they need some special care and love to do the work like us. Now take the correct option. So children, which of these is not a sense organ? इनमें से कौन सा sense organ नहीं? Eyes, ears, brain. Brain is not a sense organ. Okay? A rose has a good smell, bad smell, none. Rose में कैसे smell होता है? Good smell. A touch that makes us uncomfortable is a good touch, bad touch, both. A touch जो हमें uncomfortable feel कराता है, that is a bad touch. Okay? Now we'll learn something more. Given below are the situations you may face. How would you respond? कुछ situations दिए गए हैं कि अगर आपके सामने ये situation आते हैं, आप कैसे respond करेंगे? A stranger offers you a sweet or ice cream. कोई एक ऐसा पर्सन जो कि आपके लिए स्ट्रेंजर है, जिसे आप कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं आपने, वो आपको मिठाई देता है या आइसक्रीम देता है, तो व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप? देन यू हैव टू से, यू शुड से दैट थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर्स and so nice of you, but as I don't know you, you are a totally stranger to me, so I cannot take these things from you. Someone wants you to help him look for a lost pet. अगर कोई आके आप किसी का पेट खो गया है और वो आपसे आपकी हेल्प मांगता है कि मेरे साथ मेरे पेट को ढूंढवा दीजिए, तो what would you do? You should say yes, why not? Surely I would definitely help you in finding out your pet. A grown-up wants to get you a treat for not telling anyone that he or she touched you. If any grown-up person, uncle, any grown-up person, वो आपको टच करते हैं और कहते हैं कि इसके बारे में किसी को मत बताना, तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा या मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा या मैं आपको anything. If he offers you, what you should do, children, you should at once go away from that place and go and tell your parents about the incident that there's a grown-up person. I was playing in the park, there was a grown-up person and he came and touched me and he said this. Never hide anything, never hide this type of things from your parents. Your friend asks you not to tell her sister about her surprise birthday party. अगर आपका फ्रेंड आपसे बोलता है कि उसके सिस्टर का बर्थडे आ रहा है, उसको एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज की है उसने, तो उसके सिस्टर को मत बताना, what would you do? Yes, you should say, okay friend,
Yes, this is my promise. I will not tell your sister about her birthday party because that friend has trusted you. उसने trust करके आपको बताया है, ये बात बताई है. So you should keep your promise and don't break your friend's trust. Now fill in the blanks. The sense organs contain thousands of. क्या है sense organs में क्या thousands of होती हैं? Nerves. The dash covers the body. What covers the body? The skin covers the body. All of us like the touch of our mother. हम सबको अपनी mother का touch बहुत अच्छा लगता है. Dash computers are being made for the blind. Special computers are being made for the blind. Helen used the dash script to read. Helen used the Braille script to read. Okay? Now, answer the following questions. What are sense organs? Why are they important? The sense organs are the parts of our body, the organs of our body, which help us to recognize the things. And they are, yes, they are really very important because until and unless we recognize the things, we recognize the smell, we recognize the taste, we recognize what we are seeing, what we are hearing, then how will we be able to respond? How will we do our work? So sense organs are very important to me. How do our sense organs work? How do our sense organs work? Each and every sense organ has thousands of nerves in it. As soon as that nerve gets a signal, the signal is being sent to the brain and the brain processes that signal and sends back the message to that sense organ, which tells us what the thing is. How is the skin different from other sense organs? The skin is different from other sense organs as the skin. How does the skin work? The skin, when we press anything, when we touch anything with our skin, then the nerves present under our skin are being pressed, and as soon as the nerve is being pressed, the nerve sends a message to the brain and the brain again processes and sends back the message to the skin and tells us which type of thing are we touching. Who are differently abled people? What is our duty towards them? The people who cannot listen, who cannot hear, speak or see are differently abled or special people. And what's our duty towards them? Our duty towards them is that we should treat them with great love and special care so that they can work as we are working. What is Braille? What is Braille? अभी पढ़ा हमने कि Braille क्या होता है. Who need it and why? Braille is a special type of special code. It is a special code which is made by the combination of the raised dots, so that when the person touches it with the finger, that person can read that special code, and it is used by the people who cannot see. It is used by them to read. Now we come to the activities. A good touch makes us feel nice, warm and comfortable. Why? Yes, a good touch. If a mother touches a child, a mother hugs us, it gives us very comfort. It makes us very comfortable and we feel very good. Okay? Collect 5 things that are good to touch and paste them in your scrapbook. Write down their names. Now children, आपको क्या काम करना है? अपनी scrapbook लेनी है और उसमें क्या करेंगे? जो चीजें आपको टच करने में अच्छी लगती हैं, which you feel good in touching. Write down the names of those things in your scrapbook. उसको collect कीजिए और paste कीजिए अपने scrapbook में and then write down their names.
Make a chart showing the 5 sense organs. Discuss how you should take care of them. अभी 5 सेंस ऑर्गन्स आपने पढ़े कौन कौन से? आईज, ears, nose, tongue and skin. These are the 5 sense organs. इनका एक चार्ट में आप एक चार्ट बनाइए और उसको फिर डिस्कस करिए कि कैसे इनकी देखभाल करनी चाहिए. How we should take care of these sense organs by keeping them clean. Yes, the sense organs are to be kept clean. We should be very neat and clean. Then only those sense organs will be able to work properly. Okay? So children, this was all in this chapter. I hope you had a good time and you enjoyed learning about the sense organs, the differently able people, about the Braille, about Helen Keller. There were so many things to read about. So children, stay clamped, stay excited for the clamp of next video. I'll be back soon with something new, something interesting, something very exciting. Till then, stay blessed. Bye.